Sure, okay. Hello, dear student. Welcome to Q Physics Academy. In this lectures, we are discuss. Basically, we are continue our solid state physics class. Okay. Let's continue our solid state physics class for semester five. Semester five. Okay. So in previous class, or we are already discuss some various kind of crystal structures. I mean cubic crystals and FCC crystals and body center cubic crystals and their corresponding unit cell and the atomic cracking fractions, etc. All kind of properties we are already discussed in our previous lectures. Okay. So in today's lectures, we are discuss a very important principle, important parameters in a crystals, which is very important crystal, and that is nothing but interplanar spacings. Okay, so my name is Mithun Patro, and currently I am pursuing my PhD in Mysore, Bhubaneswar, as a planetary science research scholar. Okay, so now let's start our class. This is a solid state physics class and semester 5. Okay, very good. So this is our first slide of our lectures. This is interplanar spacing. Okay, this is interplanar spacing. What is the meaning of interplanar spacing? It's a interplanar spacing. It means there's a distance between two crystal plane to plane. Mainly, if we draw a very simplest figure, let us consider a three-dimensional coordinate system. Let us consider a three-dimensional coordinate system. This is a three-dimensional coordinate system, x, y, z. Okay, x, y, z, and we consider two plane here. Draw two plane here, two HK plane H here. Okay, these two are the HK plane one. This is a H1, K1, L1 plane, and this is H2, K2, and L2. So the distance between these two plane is called H interplanar spacing. So here we are trying to calculate what is the value of interplanar spacing, and that is mainly denoted as DHKL. Okay, it is called interplanar spacing. Interplanar spacing. Okay, interplanar spacings for any kind of crystal, that is like we are here mainly discuss some cubic crystals as well as hexagonal crystals. Okay, so trying to develop the mathematical form of DHKL. HKL are in suffix forms, in a suffix. Okay, so interplanar spacings. So here we first of all you can notice the left hand side figure. Here we consider a coordinate system x, y, z. Okay, this is x, this is y, and this is z, and this is the origin of the coordinate system. And we consider here one HK plane is already present here. First assume a plane, and on this plane we draw a coordinate system x, y, z. So we consider here already a plane is present is here, and next we consider another plane ABC. This is the another plane. Okay, this is the another plane, this is the another plane we consider here. This is the another plane, this is the another plane we consider here. Okay, this is the another plane ABC we consider here. So let the plane ABC be
Sorry, this is very excellent. Yeah, this is something a problem. No, don't worry. This is a plane. Okay, this is a plane. This is a plane, HK plane. So we consider here, let a plane ABC be one of the planes that has a intercept OA, that have intercept OA. This is the intercept OA, and OB. This is the intercept OB, and another intercept OC. Okay, so we consider a plane from these origins, and this plane have a intercept OB, OA and OC on x, y, z and axis respectively. So OA is nothing but OA is nothing but A by H. Why we are know how when you find out the Miller indices. When you find out the Miller indices, first of all we take intercept, right? We take some basic idea. First we take intercept. Okay, first we take intercept, that is nothing but OA, OB and OC, and then we divided by translational vectors. So it is nothing but OA upon A, OB upon B and OC upon C, and then we take a reciprocals, that is nothing but A upon OA, right? B upon OB and C upon OC, and it is called actually the value of H, it is called H, and it is called K, and it is called L. Already we are discussed here. So H is nothing but A upon OA, H upon equals to A upon OA, and K equals to B upon OB, and L equals to C upon OC. So we can easily write from these expressions. OA is nothing but A upon H, OB equals to B upon K, and OC equals to C upon L. Okay. So now in cubic crystals, as you know, for cubic crystals, A, B, C are already equals. Already mentioned. So it is the cubic crystals. A, B, C are already equals. So OA equals to A by H, OB equals to A by K, and OC equals to A by L. Okay, A by L. So this is the first part of our calculations. Next is we trying to calculate the value as OA equals to A by H, OB equals to A by K, and OC equals to A by L. Next, let the next plane parallel to the plane ABC passes through the origins, because as you know this plane, this HK plane, this HK plane's origins, center, is perpendicular to the origin of previous planes. Perpendicular to the previous plane. This is origins of the previous planes, and this is the origins. This is the origins of new planes ABC, and it's have a Miller indices HKL. So let us draw a perpendicular from O to N. ON. Let we draw a perpendicular. Draw plane from O, ABC, and this perpendicular distance from origin, perpendicular distance between these two planes origins, it's called interplanar spacings. So here ON is called DHKL, represent the interplanar distance. So interplanar distance, it's nothing but a distance between the origins of two planes, right? Interplanar distance is nothing but a distance between two origins of two planes. Okay, next this perpendicular distance, this perpendiculars makes an angle with x-axis alpha, makes with y-axis beta, and makes with z-axis gamma. So let alpha, beta and gamma be the angles, okay, be the angles
coordinate with respect to coordinate axis x, y, z on respectively. Because when you draw these perpendicular, then this perpendicular makes an angle with x-axis, y-axis and z-axis. So these angles are alpha, beta and gamma. Okay, alpha, beta and gamma. Okay, next we come to the next slide. This is the another slide. Okay, so here the pictures is pictorial form is very clear. So here OA is nothing but, already know the intercepts are OA equals to, this is the value, OA, this is the value, OA is equals to A by H, OB equals to A by K, and OC equals to A by L, right? A by L, this is equations 1. And ON, the interplanar distance, is already mentioned, B equals to DHKL. As ON is the perpendicular to N, this is the value of NA, this is the value of NA. ON is perpendicular to NA from the triangle ONA, from the triangle ONA, so we can write cos alpha equals to ON upon OA, and ON is nothing but D and OA is nothing but A upon H. So cos alpha equals to DH upon A. As a similar form for O and B, as a similar manner, we take another triangle O and B. Okay, we take another triangle O and B. This is the triangle O and B. Triangle O and B. From this triangle we get cos beta, and cos beta equals to dk upon A. And similarly for ONC, from this triangle ONC, this is the triangle, right? This is the triangle ONC, and from this triangle cos gamma is equals to DL upon A. So as do you know the alpha, beta, gamma are the cosines. So as you know the relations between the cosine angle, this is the well-known relations. Cos square alpha plus cos square beta and cos square gamma is equals to 1. And using this well-known relations and put the value, corresponding value of cos alpha, cos beta and cos gamma, we get the result here, d square h square upon a square, and d square k square upon a square, and d square l square upon a square equals to 1. Now you take a common, d square upon a square, take a common, so it is equals to h square, k square, l square equals to 1. So nothing but d equals to a upon h square, k square upon l square. And this expression is only valid for cubic lattice, right? Cubic. And for cubic lattice, a equals to b equals to c here. This is the expressions. If this expressions, we are calculate these expressions for any arbitrary lattice, arbitrary crystals which have a not equals to b not equals to c, then how can I calculate it, right? So how can I calculate it? So as cos alpha equals to dh upon a, cos beta equals to dk upon b, okay, and cos gamma equals to dl upon c. We get this value, and again this using this well-known expressions cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, then we get the cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1, and substitute all the values, we get d square h square upon a square plus d square k square upon
square plus d square L square upon c square equals to 1. So after now here we take common only d square part, right? So taking d square is common, so we get h by a upon a square, k by b upon a square, and L by c whole square, and that is equals to 1. Okay. Next d square, so d square equals to 1 upon h square upon a square, yeah, k upon b whole square plus L upon c whole square. So finally we get d equals to 1 upon root under h upon a whole square, k upon p whole square, L upon c whole square. So this is the general form of interplanar spacing for any kind of crystals. But for here, for cubic lattice A, B, C are equal, so then we get this result also. Okay, so this result also. So this is the approach. This is the approach to calculate the interplanar spacings for any kind of crystals. Okay, now we trying to find out the for cubic lattice. This is the interplanar spacing expressions. This is the interplanar spacing expressions for cubic lattice. Cubic lattice, only for cubic lattice, because it's A equals to B equals to C, and this is for any arbitrary lattice, and this is valid for any arbitrary lattice. Okay, this is valid for any arbitrary lattice. Please remember this formula. Okay. Next we calculate some important case. Let us calculate some important case based on interplanar spacing. So as you know, here actually HKL are nothing but in Miller indices, right? Miller indices, and A, B, C are nothing but lattice parameters. Okay, lattice parameters. So please remember this too. Now for simple cubic crystals, what is the value of interplanar spacings? Okay, what is the value of interplanar spacing? So DHKL for simple cubic crystals is nothing but A upon H square K square upon L square. This is special form, and this is it is a general form. Okay, it is general form. Please remember these expressions. General form. This is a special form for simple cubic lattice. So for simple cubic lattice, we calculate for the interplanar spacings for various planes. I mean 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, etc. Okay, and
After calculating these values, we finalize a very important conclusions, and this conclusion is very important in your studies, in your uh, competitive exam purpose as well as semester exam purpose. Okay, so as we calculate, here D110, what is the value of D110? D110. Okay, first we calculate D100, and then its value is equals to A upon 1, so that is equals to 1 A. Okay, next we calculate D110. Next we calculate D110. So D110 is equals to, we get A upon 1 square plus 1 square plus 0. So it is nothing but A upon root 2. Okay, it's good. Next is T11 value. So it is equals to A upon 1 plus 1 plus 1. So that is equals to A upon root 3. It's okay. This is very easy, है ना? It's very. But this case, for this value D8KL value, when you calculate it for BCC latics and FCC latics, there is exceptional. There is a exceptional case. Okay. So what is the exceptional case? We are trying to know about that. Right. चलो, जो एक्सेप्शनल है उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज द एक्सेप्शनल? व्हाट आर द एक्सेप्शनल? या फर्स्ट take a note. It's a very important note. Okay, it's a very important note. If any crystals have additional plane, then interplanar spacing, then interplanar spacing, D HKL equals to half into cubic, for cubic lattice, H square K square plus L square. Please multiply it with half. Okay, for additional plane. Now we try to understand what is the meaning of additional plane. हम लोग अभी ये जो additional plane हमने यहाँ पे मेंशन किया, इस additional plane को समझने का कोशिश करते हैं. What is the meaning of additional plane, etc., etc., etc. Okay, additional planes. So first of all, we are trying to draw something. Note number 1. This is note number 2. It's very important. In BCC and FCC,
all atoms are not covered by 100 plane. In BCC and FCC, all atoms are not covered. हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे. Don't worry, just I try to understand what are you मैं actually क्या बोलना चाह रहा हूँ, right? In BCC and FCC, all atoms are not covered by 110 planes. So draw the extra plane. Draw the extra plane and due to this interplanar spacings interplanar spacings is half is D100. This is for BCC and FCC. This is for BCC and FCC is equals to half into A, that is equals to A by 2. एक बात आराम से देखिए, जब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स था, ठीक है, जब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल था, है ना, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स के लिए D110 का वैल्यू आपको A मिला था, राइट, इसमें आपको A मिला था. बट फॉर BCC और FCC लैटिक्स में देखिए, BCC और FCC लैटिक्स में फॉर 110 प्लेन्स value of interplanar spacing is not equals to A, it is equals to A by 2. This is the exceptional case because 110 जो प्लेन है ना, 110 जो प्लेन है, ठीक है, उस 110 planes are not covered all the atoms in BCC and FCC lattice. In BCC and FCC lattice. So for covering all the atom, we draw extra planes. And due to these additional planes, we multiply here half. This is the reasons behind that. Next note is note number 3. एक एक चीज़ को आराम से समझने की कोशिश करो, आराम से समझने की. Note number 3. Now we try to calculate D110 planes, right? What is the value of D110? इसके लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग का वैल्यू एक्चुअली क्या होगा, इसके लिए भी क्या आपको हाफ मल्टीप्लाई करना होगा, क्या करना नहीं होगा, ये आपको समझना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग इट D110 planes. So for we calculate is FCC lattice, BCC lattice. Okay, this is BCC lattice. Okay, shows that axis. Yeah, if we take this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis, don't worry, and there is a atom inside this crystals. If we draw 110, it means x equals to 1, x equals to 1 is here, and y equals to 1 is here also. So it means we are connect this point also and draw it. So this is your
plane. Okay, and so these planes and these planes covered the body center atoms. These planes covered body center atoms. Okay, these planes only body center atoms. So here 1 1 0 planes only covered body center atoms. So for BCC crystals, hence for BCC D110 is equals to A upon 1 plus 1s, that is equals to 1 upon root. ये यहाँ पे कोई हाफ मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं, so there is no need to multiply half, because जो बॉडी में जो एटॉम था, एक्स्ट्रा एटॉम था, उसको कवर अप करने के लिए ये प्लेन सफिशिएंट है, D110 प्लेन. बट अब इस D110 प्लेन्स इफ वी कैलकुलेट फॉर FCC लैटिस, ओके, FCC lattice, then what happened? So then actually what happened? It is very important. Okay. Yeah, that's fine. This is X, this is Y, this is Z. There is something, this is the plane. But here all the atoms are present in FCC center. Also there is a 2 holes present in that place. So यहाँ पे देखिए जो फेस में जो जितना सारा इस प्लेन्स को थोड़ा बहुत हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं. ये प्लेन है ना, D110 प्लेन, ठीक है. ये क्या है? 110 प्लेन्स. बट ये 110 प्लेन्स इज नॉट कवर्ड अप ऑल द एटम्स फॉर FCC लैटिस. सो इस क्रिस्टल में FCC क्रिस्टल के लिए ऑल द एटम को कवर अप करने के लिए वी नीड एक्स्ट्रा प्लेन्स. सो फॉर दिस एडिशनल प्लेन्स इंटरप्लेनर स्पेसिंग्स कैलकुलेट करने के बाद आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे. Okay, so please remember this 110 planes, 110 planes not covered all the atoms placed at face side. So we need more plane. We need more plane. To cover up atom. Okay, so hence इसके लिए D110, इसके लिए FCC के लिए क्या आएगा? एक आपको हाफ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा
और देन a upon root 2. So it means a upon 2 root 2. So please remember these points also. तो देखिए अब तो इसके लिए आपके पास एक ट्रिक भी होगा, डोंट वरी, आप परेशान मत होइए। आपको कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करना होगा, इस एडिशनल प्लेन किस में है, ये तो आपको हर बार आप फॉर कैलकुलेटिंग हर बार आप ड्रॉ नहीं करके देख सकते। इसके लिए आपके पास कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। एंड देन यू कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग्स फॉर एनी काइंड ऑफ क्रिस्टल फॉर एनी प्लेन्स। कब आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा और कब हाफ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हम लोग देख लेंगे। ओके, सो व्हेन दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो लेट्स अ ट्रिक, हम लोग इसके बारे में कुछ ट्रिक लेंगे। देन इंटरप्लेनर स्पेसिंग्स हम लोग बहुत सारा एक प्रोग्राम के थ्रू, मतलब एक डायग्राम के थ्रू, एक बॉक्स टेबल के फॉर्म में हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग्स के बारे में आपको एक नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई ए ट्रिक। या ट्रिक, लेट्स टेक ए हेडिंग ट्रिक। What are the trick actually? Note down. First point is here. First point, in simple cubic, no any additional space. सिंपल क्यूबिक में आपको कोई एडिशनल प्लेन मिलने वाला ही नहीं है। सो उसमें बहुत ही सिंपल है, जो भी प्लेन होगा उस प्लेन के रिस्पेक्ट में आप इंटरप्लेनर स्पेसिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन सिंपल क्यूबिक no any additional plane present. No any additional plane present. Second point, in BCC, if H plus K plus L equals to even, remember, ठीक है, जितना सारा वैल्यू आपके पास गिवन होगा उसको आप ऐड करने के बाद अगर आपको इवन वैल्यू मिला, इवन हो रहा है, ठीक है, एंड इफ एनी प्लेन does not follow this equations, इस इक्वेशंस को फॉलो नहीं किया, ऑड हो गया, देन व्हाट हैपेंड, इफ एनी प्लेन डज नॉट फॉलो these equations, the additional plane present. Okay, then additional plane present. Okay, इस आपको एडिशनल प्लेन कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। अगर एच के एल का वैल्यू इवन आ रहा है देन एडिशनल प्लेन इज नॉट प्रेजेंट। इट्स मीन्स अगर आप इसको आराम से लिखना है, इवन आया, ठीक है, अगर इसका वैल्यू इवन है, नो एडिशनल प्लेन, और अगर एच के प्लस एल का वैल्यू आपको वर्ड मिला, प्रेजेंट एडिशनल प्लेन्स। ठीक है,
तो एडिशनल प्लेन प्रेजेंट होगा तो उस प्लेन के रेस्पेक्ट में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसको आपका हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा। प्रेजेंट additional plane. Okay, this is for BCC crystal. It is this rules is only valid for BCC crystals. Okay, next we come to FCC crystals. What are the point? Fourth point for FCC crystals. For FCC crystals. FCC crystals. FCC crystal में क्या होगा? H all H comma KL all H comma K comma L are even. H का वैल्यू भी इवन होगा, K का वैल्यू भी इवन होगा, H इज इवन, K इज इवन एंड L इज ऑल्सो इवन और ऑट मतलब H K L 1 1 1 इट्स ओके, H K L 2 2 2 इट्स ओके, 1 2 1 इट्स नॉट एक्सेप्टेबल है यार। ओके, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इफ डज नॉट फॉलो, does not follow, then additional plane is present। मतलब समझ नहीं आता है ना, मतलब एच के एल का वैल्यू, सारे वैल्यू क्या होगा इसमें इवन होना चाहिए, हर एक का वैल्यू, इच वैल्यू इज इवन, इच वैल्यू इज इवन। और क्या होना चाहिए, और एक पॉइंट क्या, एच के एल इच वैल्यू ऑड होना चाहिए, each value is odd। then क्या है, no additional plane present, no additional plane present। बट थर्ड केस ये है, एच के एल का जो मान है, मिक्सिंग ऑफ ऑड एंड इवन वैल्यू, mixing of odd and even value then additional plane is present, additional plane is present। ओके, तो दिस इज द रूल्स। तो जब आपके पास एडिशनल प्लेन प्रेजेंट होगा, देन इंटरप्लेनर स्पेसिंग का वैल्यू क्या होने वाला है, और एडिशनल प्लेन नॉट प्रेजेंट नहीं है तब इंटरप्लेनर स्पेसिंग का वैल्यू क्या होने वाला है, आपके पास ऑलरेडी हम लोग बात किया, ठीक है। ओके, दिस इज द रूल्स हियर। नाउ वी टेक ए टेबल, ठीक है। हम लोग अभी एक टेबल ड्रॉ करने वाले हैं। टेबल के थ्रू हम लोग समझेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। टेबल के थ्रू हम लोग एक इंपॉर्टेंट वैल्यूज को समझेंगे। ओके,
एक सेकंड, आपके पास सारे वैल्यूज़ है, परेशान मत होइए। हम लोग जस्ट एक एक चीज़ को सीखेंगे, जस्ट सीखना है हम लोगों को, है ना। अगर हमारे एक बार सीख लिया ना, सारे वैल्यू को एक बार अच्छे से सीख लिया, सो वी गेट वेरी इम्पॉर्टेंट, हम लोग बहुत बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सीखना इम्पोर्टेंट है। ओके ओके या वन इज ऑल्सो इजियर, एक ज़रूरत है, ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इट्स फाइन। टेबल बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखिए क्रिस्टल, यहाँ पे लिखिए T100, यहाँ पे लिखिए D110 और यहाँ पे लिखिए D111। दिस इज सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स, दिस इज BCC एंड दिस इज FCC। तो देखिए हम लोग बोला सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, ठीक है, जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स के लिए क्या होता है, इसमें कोई एडिशनल प्लेन होता ही नहीं है। तो D110 का वैल्यू क्या होगा, A होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, A/√2 होगा, इसका वैल्यू A/√3। देयर इज नो एडिशनल प्लेन, देयर इज नो एडिशनल प्लेन, राइट। बट फॉर BCC क्रिस्टल्स, देखिए BCC क्रिस्टल के लिए मैंने क्या बोला था, BCC क्रिस्टल के लिए जो एडिशनल प्लेन का जो रूल्स है, उसको भी हम लोग एक ये बना देते हैं, ठीक है, तो अच्छा होगा, इधर लिख देते हैं हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लिख देते हैं नो एडिशनल प्लेन। और यहाँ पे एडिशनल प्लेन का जो रूल्स है, इसमें क्या होगा चाहिए, H + K + L का वैल्यू आपको इवन होना चाहिए, ठीक है। देन नो एडिशनल प्लेन्स, और क्या बोला, HKL का वैल्यू आपको इवन और A होना चाहिए, देन नो एडिशनल प्लेन होगा। अब 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऑड वैल्यू मिल रहा है, इसमें 110 में आपको ऑड वैल्यू मिल रहा है ना, ऑड मिल रहा है। तो अगर वैल्यू ऑड मिल रहा है, ठीक है, वैल्यू ऑड मिल रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, A से आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। देन आप D110 में देखिए, इसका वैल्यू इवन आ रहा है ना, इसका वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। तो इसका वैल्यू अगर इवन मिल रहा है तो इसका वैल्यू जैसा था ऐसे ही होगा, सेम वैल्यू होगा, कोई हाफ से मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। देन अगेन D110 में देखिए, अब इसको ऐड करने के बाद आपको 3 मिल रहा है, इसका मतलब ऑड वैल्यू मिल रहा है ना, इसमें आपको ऑड वैल्यू मिल रहा है। तो ऑड वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब इसको आपको 2 से हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा। इज इट क्लियर? इसी तरह आपको सॉल्व करना है। देन अगेन FCC में देखिए, मैंने बोला HKL का वैल्यू इवन होना चाहिए और ऑड होना चाहिए, बट यहाँ पे देखिए मिक्स है, 0 इवन है, 1 ऑड है, दिस इज मिक्स है, दिस इज मिक्स,
यहाँ पे मिक्स है, तो मिक्स है तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि दे आर वे एडिशनल प्लेन। देन यहाँ पे भी देखिए मिक्स है ना, D110 1 ऑड है 0 इवन है, तो यहाँ पे भी मिक्स है, यहाँ पे भी मिक्स है, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 2√2। और यहाँ पे देखिए सारे वैल्यू इवन ऑड है, ऑड नो मिक्स 1 1 1 1 सारे वैल्यू ऑड ही है, ठीक ठाक है। यहाँ पे मैंने बोला ना ऑड सारे वैल्यू ऑड होगा नहीं तो इवन होगा, यहाँ पे तो ऑड ही है, सो डोंट वेरी। सो इसका वैल्यू कोई हाफ से मल्टीप्लाई होने वाला नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखेंगे तो इसका वैल्यू होगा 1/3। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस टेबल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल क्यूबिक में नो एडिशनल प्लेन, नो एडिशनल प्लेन, इसमें कोई प्लेन एडिशनल प्लेन होने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट हम लोग बात किया इसमें, एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल्स बात किया, ठीक है, एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल्स बात किया। इसमें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस सारे पॉइंट को आपको याद रखना चाहिए। आई थिंक यू विल कैलकुलेट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द इंटरप्रेनर स्पेसिंग्स, कैसे आपको इंटरप्रेनर स्पेसिंग का कैलकुलेशंस करना है, कैसे आपको एक पॉइंट को डील करना है, वो आपको अच्छे से लर्न किया, आई थिंक यू लर्न किया। ओके ओके ठीक है, तो हम लोग यार कुछ एक्स्ट्रा बात करने वाले हैं। जो इंटरप्रेनर स्पेसिंग्स है, कुछ क्रिस्टल के लिए आपको जस्ट याद रखना है, कुछ क्रिस्टल के लिए आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस, अगर आपका जैम का एग्जाम देखिए, जैम का एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इन IIT जैम एग्जामिनेशन दे आस्क क्वेश्चंस डायरेक्टली, ठीक है। दिस वो IIT जैम पास IIT जैम के लिए बहुत क्वेश्चंस ये लोग पूछ लेता है यहाँ पे। तो फॉर क्यूबिक, ये आप लिख के रखिए, फॉर क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक के लिए THKL का जो वैल्यू होता है क्या होता है, A/√H² K² L², बिकॉज इसमें A, B और C और अल्फ़ा बीटा गामा सारे का वैल्यू 90 डिग्री होता है, इसलिए। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर टेट्रागोनल, फॉर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, ठीक है। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल जो क्रिस्टल्स होता है, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस वैल्यू, टेट्रागोनल A इक्वल्स टू B होता है बट C नॉट इक्वल्स टू होता है ना। और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। प्लीज रिमेंबर A और B का वैल्यू इक्वल होता है, बस C का वैल्यू नॉट इक्वल। तो इसके लिए DHKL का वैल्यू क्या होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, तो आप लोग याद रखिए 1/, A और B इक्वल है, इसलिए H² + K² अपॉन स्क्वायर, ओके, प्लस L² अपॉन C², दिस इज द वैल्यू, है ना। और एक होता है ऑर्थोरोम्बिक, और एक होता है फॉर ऑर्थोरोम्बिक,
ऑर्थोरोम्बिक के लिए क्या होता है, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, और अल्फ़ा बीटा का मान 90 डिग्री होता है। अल्फ़ा बीटा कामा 90 डिग्री। देखिए ऐसा ही होगा, अल्फ़ा बीटा का मतलब हर एक बार का 90 डिग्री। आराम से इसको डील करना सीखिए, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर लोगे, है ना। एच के एल क्या होगा 1/√अंडर एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर वन स्क्वायर। फॉर हेक्सागोनल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आया था, इससे जैम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। फॉर हेक्सागोनल इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जैम में। हेक्सागोनल में क्या होता है, हेक्सागोनल और टेट्रागोनल दोनों में से थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हेक्सागोनल और टेट्रागोनल में ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, बट अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री होता है, बट गामा इक्वल्स टू 120 होता है। प्लीज़ रिमेंबर हेक्सागोनल और टेट्रागोनल, इस दोनों में आपको कन्फ्यूज़न होना नहीं है। इसके लिए डी एच के एल का जो वैल्यू होता है थोड़ा सा अलग होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इस एक्सप्रेशंस को डायरेक्ट पूछा था। प्लीज रिमेंबर 4/3 एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस L square upon C square. Please remember these expressions. 1 C square whole to the power. Please remember, it's very important for competitive exam purpose. देखिए आप हेक्सागोनल और टेट्रागोनल दोनों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हेक्सागोनल और टेट्रागोनल, फर्स्ट सेकंड वाला और थर्ड वाला, ठीक है। सेकंड वाला और थर्ड वाला इज इम्पॉर्टेंट है। सेकंड वाला और लास्ट वाला इज इम्पॉर्टेंट। आपको दोनों को आपको अच्छे से जानना चाहिए, है ना। सेकंड वाला और लास्ट वाला आपको अच्छे से इसको लर्न कीजिए। रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर दिस टू पॉइंट, प्लीज रिमेंबर दिस टू पॉइंट, ओके। प्लीज रिमेंबर दिस टू पॉइंट्स। Yeah, that's fine.